क्या हो गया? हाँ, relax. Arrange. Why always these people are very late? You keep time. Easy way. I am particular with my timing. That you know. Yeah, I know. Actually, the rickshaw was not working here. Where you come from? It's from that side. That side. Sanpura. Like I come walking, but it was late. Sharad, एक pen दे दे मुझे. We are in public finance. Yeah. Come. So the day I will have to station the people outside. Except me, nobody is going to be in. I pen. Good. Say it. House shift to तो पहले के नियर बाय था हाँ नियर तभी भी नहीं कर रहा नहीं तभी तो मेरे फोकस एक ठीक बार है फिर उसके बाद कुछ है इसे मेरे को बीच में संस्कृत में मिले थे उनको मैसेज डाला ग्रुप में कि कौन आ रहा है मेरे को पिकअप करने के लिए चाहिए नहीं उसमें वो जहाँ स्टार्ट करने में लगता हाँ check करना the last topic public planning I think we have finished we did the merits and demerits. I have to start with GST direct and indirect taxes correct Yeah, page number 201. In this Sunday I am fixing yours correct tomorrow I will confirm your time don't give me a Yeah, we were waiting for this Sunday also. Okay, is there a class or is there? Economics. Yeah. तो सब लोगों को बोल दो मुझे का टाइमिंग है अवेलेबिलिटी दे देंगे तो है ना लास्ट टाइम तो 9 का सक्सेसफुली मैं 2 घंटे में उनका पोर्शन भी खत्म कर तो सिमिलरली फॉर यू आई हैव टू सी दैट just check merits and demerits of indirect taxes we have done We have to do the demerits of indirect taxes. taxes This will be so write the heading demerits and write points quickly so that we can have a good discussion on this. What do you mean? No, sir, actually I have the habit of generating, so that's why. Which are this, huh? Chal, ठीक. Point number 4. It is highly चल रहा है No. regressive in nature.
for your convenience and like good है ना easy God, Nandini has it. संस्कृति और लैंग्वेज मुझे के ध्यान में क्लास आए मेरे को लगा क्लास ही जा रहे हैं और कुछ टाइम Heidi, stand out. I'm not going to allow you. Why? Why? What is the timing you are coming in? Huh? I have started the topic means I will not allow you. Tell me the reason why late. Sir, actually These people have seen you. मैंने what? नहीं, मैं ऐसा- इतनी जल्दी जल्दी में आई थी but Where were you? actually I wanted to give something in my knowledge. Son, then come to my building. हाँ अरे सवाल Then go to her building. Sir said them to come down with the teams. दो के अंदर रख के बच्चों अंदर रख के especially ये मैं करूँ लेट हो गया मेरा बैठे को भेज दो how casually you take my lectures now. No, sir, I'm Look at okay. this girl running. Look at this girl hopping and Sir, I'm always on time, sir. Why should I not ready? Because it won't happen. चलो ठीक है क्या next time It won't happen again. देखते हैं अभी संडे है क्लास Sir, you said that last time also. I thought economics. हाँ but क्या करें ना because you were having that what is another lecture so that is the reason they cancelled or cancelled me my lectures चलो अभी लेट आए ना especially my dear student what's your name you are not talking at all today only the points for you only specially I'm writing down the ask her हाँ देखो बट ये चलो तो वो बता Sir said, "Well, yes, sir, please." हाँ देखा correct she remembers मैं मेरा पाउच भूल गई हूँ आज। just 1 minute huh? just write those points which are clear no 2 minutes only yes एक बॉल पेन कुछ भी चला ये है मेरे पास। हाँ जी चलेगा ऐसे क्या करना है इससे मिलेगा। हाँ इससे मिलेगा। बोलते नहीं है इजिया सुनो मैं ना अपने मम्मी और घर पे नहीं है ना मैं कन्विंस में दादी कर रही थी पर एक दिन दिवाली वाली करते हैं मेरे घर मेरे को स्कूल में ऑक्सफोर्ड में बता देना ताकि मैं उसके रात के पहले वो तेरे 2 फिल्म्स और फिल्म्स जिन्होंने बोला है already demerits of बहुत सारा है ना हाँ अबे बस गर्मी बढ़ने लगी दिवाली में रहती है भाई गर्मी तो दिवाली बस अभी अबे ये महीना बेसिकली नवरात्रि है दिवाली नहीं है दिवाली नवंबर में होती है हम क्या कर रहे हैं भाई demerits of indirect tax बैठे बैठे इतनी गर्मी लग रही थी सब धूप कड़क आ रही है मैं खेल रहा हूँ मुझको देख के ऐसा हो रहा था मैं शिफ्ट नहीं मेरा घर रेनोवेट हो रहा था उसके हिसाब से मैं वापस से वो वापस चले गए घर पे इधर ही है मतलब कि इधर ही है बस थोड़ा आगे एकदम मेरे को रिक्शा ही नहीं मिल रही थी मैं बोल रही हूँ मैं मम्मी को कॉल करके स्कूटी लेके आज मेरे को उठा लो कभी जल्दी पहुंचना क्योंकि इसके साथ जो हालत हुई थी वो मेरे को याद आ रही किसके साथ बाहर खड़ा कर दिया था मैं 5 मिनट के लिए मैं तो कह रही थी क्या तो बातें कर रही हूँ आंटी के साथ इधर हो अभी तो मेरा चॉकलेट आएगा उनको से देनी थी आज तो मेरे को लगा मेल्ट हो जाएगी 1 घंटा बैठे बैठे फिर भी इधर ना एसी के सामने रही थी ये नहीं आ रही सिर्फ हाँ हमें आ रही है उसमें कॉल कर रहा हूँ कि जिया उसको अरे उसको पता है पहले प्रॉब्लम आ गया तो फिर इसके वो ये वाली डॉक्टर का था बाल काटने गई है मैं वही बोली स्टोरी का तो देखा खुशी खुशी गाली है जो हंस के है उसमें कुछ नहीं हो रहा देखो मैं बट तुम लोग आते तो मजा आता 4 लेक्चर बट मैं एंड में बहुत थक गए थे
हम कलर थे तो सोच इतना जनरल थकावट प्रवीण आया था मेरा प्रवीण ने तो मेरे को पहले बोला था वो आएगा अभी वो हमारे बोले जैन प्रवीण का वो तो नहीं आएगा नहीं प्रवीण मैंने जब एग्जाम पूछा ना तो बोला अभी उसके वो बीजेपी वाले सब हैं तो वो बोला कि तू जा रहा है तो भी तो मेरे को आ रहा है बोला हम उसी का होगा मैं तभी समझ रही थी आ रहा है मेरे गवर्नमेंट जॉब But हमका ये बात एक्सपीरियंस I think I forgot my pen that's yeah नहीं दैट्स can I वही है please तेरा use this the shoulder एक बात मुझे याद है आपको पता है मैंने बहुत बोला कितना मुझे पता नहीं नहीं, अबे स्कूल में। बॉयज वॉशरूम में थोड़ा कांच छोड़ दिया इसलिए वो आवाज आया बड़ा सा अबे 6 सब्जेक्ट के लेक्चर में वही आवाज आया मेरे को भी फोड़ना है यार No. इसका You just mail me. I'll deliver it in your mail. हमें भी फोड़ना चाहिए था Sure. Thanks. What was that point? Second point we have written. yeah third Lacks. What is the civic consciousness that I was planning to give? I'm sorry for that. Another thing called. it's okay sir I'm not able to. Just 7 minutes to do this. do you want water Give you're not feeling okay na me some juice. It was so. which you can't take नहीं ये हमेशा पी के मुंह लगा के पी के आता है। अरे मुझे वो नहीं अरे मैंने नहीं खरीदा ये फिर इसे खरीदा। हाँ मैं So, ऊपर से kind लिया of है you. यार But बाद में लेते हैं, हाँ? Thank you. जब तक खत्म हो जाएगा क्या हो जाएगा? खत्म अच्छा। if you are ready to finish ठीक है, I'm not a big fan of all this, but ठीक है, आपने पहले बार ऑफर किया, thank you so much. I'll just add one darker. Okay, just right, taxpayers, as it is imposed on, so continue करना है commodities, which are purchased and sold. That's it. which are purchased Sold. Highly uncertain in nature. is it levied Yes. I'm just writing it. Anyway, I'll try and spend with you guys for explanations. Huh? अगर आपको लग रहा है कि difficult point दिया है मैंने, है ना? sir Yes. sir how do you remember all these words by heart वो तो पढ़ा था. Since how old are you? That much years of experience I have teaching only this subject. Forget about advanced subject which I teach. But I stick to certain things because ज़्यादा लंबा नहीं हुआ, है ना? Simple or straightforward. no just asking because the So one work you keep on doing for day in and day out, na, you might be more brilliant. मैं तो बस छोटा सा क्या है drop in the ocean. You are a big ocean. You all are in fact. Let's see what you said. Right. Individual. Start with it. Oh, economics में कौन है cousin? मन की बात इतना जोर से यहाँ तक आता है. last word Savings. It discourages the saving. उसी को simplify that. Savings. Savings. It is
charged on the that will be better. Consumption goods. Only. So what is your name? She asked me a very funny question. What's your name? What? Your name, I asked. Name. Sanskrit. Sanskrit, I remember my 11th, I think, not 11th, 11th only. My same question asked by my teacher. Economics में तेरे इतना क्या है? Because I remember entire 12 batches में से ना, out of 50 I got 49 and a half. First, मतलब ऐसा है मुझे भी नहीं पता वो शायद मैम ने कहा था which was no blah 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 to me. मुझे इतना स्पेशल लगा ना फिर जब भी वो लेक्चर्स लेने आते थे ना very very then she will start the lecture. थोड़ा भी at that age I used to be a little bit very silent type. मुझे बहुत अच्छा लगता था और जैसे संस्कृत ने मेरे से पूछा वो भी मेरे से पूछे इतना क्या है इकोनॉमिक्स में तुझे तो मैडम आप पढ़ाती है अच्छा एंड एक दो बार जाके लाइब्रेरी में बैठी थी वो तो मैंने मैडम इससे तू ऐसे ऐसे डाउट पूछता है ना तो मुझे लाइब्रेरी में बैठना पड़ता है आई थिंक आफ्टर 5 years I completed my degree and I became a full-fledged economics teacher from where I was ना तो फर्स्ट आई वाज लेक्चरिंग तो मेरे एक स्टूडेंट का भाई था जो वो मैडम के नीचे पढ़ता था मैंने मैसेज छोड़ दिया कि मैं कि उनका एक पुराना स्टूडेंट सो एंड सो इज बिकम एन इकोनॉमिक्स टीचर तो शी सेंट मी अ रिवर्ट मैसेज telling me कि गॉड ब्लेस हिम आई स्टिल रिमेंबर हिम हाउ उसने मुझे टॉर्चर किया इकोनॉमिक्स तो देखो सम स्टूडेंट्स ऑलवेज यू नो मेरा छोड़ दो आप लोग को सम स्टूडेंट्स इज ऑलवेज क्लोज टू माय हार्ट इज नॉट स्टडी तो करती हैं बट कुछ ऐसा आपने ऐसा कर दिया जो मुझे कभी-कभी याद है तो क्या बोलते हैं हिंदी में शायद ये अच्छी है इसका हिंदी याद ही तो है जो ना जिंदगी हाँ करेक्ट बाकी तो क्या डे इन एंड डे आउट हम वही काम करते हैं चलो shall I explain stopping your writing or shall I finish it off एक last one कहीं नहीं आया बोला nowadays he is missing too much of classes what he is out actually अच्छा Sir, the test का वो question. हाँ हाँ मुझे याद है यार उस दिन मैं कुछ अर्जेंट बात कर रहा था अर्जेंट you are not having maths na after this No, I'm not a math student. देखो the first rule when you are writing studying ना try to avoid talking क्या हो जाएगा ना Practice added. आपको जब लिखते समय आपका आधा आंसर याद हो जाता हाँ बोलो yes So what is that? So prices की बात क्या है? Add increase in okay. adds to the adds You complete. now let us discuss a healthy explanation of a discussion shall I Yes, sir. now look here indirect taxes is totally different from direct that everyone knows you also don't know that you are paying the taxes but you are paying through the price okay so the first one that you have written it is highly regressive it is opposite of regressive is opposite of very good what is progressive progressive is direct tax hai na is progressive direct tax yes more the income
the more is the tax. Less is the income, the less is the tax. But इधर ऐसा नहीं. ये regressive क्यों बोला है? Because I am buying the commodity for which you and me do not want to pay the tax. But seller easily passes the burden on to you. So you don't know exactly how much you are paying, but you are paying for it. So that is why it is going to discourage you. Second concept of civic consciousness, it is very simple. Imposed on the commodities which are purchased and sold. What is civic consciousness, by the way? Civic consciousness. You told it last time. Because you throw the paper balls or whatever exactly in the dustbin. You keep your environment clean. Try not to, litter around. Try to be silent inside my lectures, etc., etc. वो civic consciousness में नहीं आता है. मतलब you are cautious. You understand what are your duties. अभी ये क्या कर रहा है? There is no civic consciousness because buying and selling को encourage करना चाहिए. Is it encouraging? Discouraging होगी ना? When you are coming from foreign country, है ना? You have this customs officers. I've seen many times. Embarrassing the people, बैग ओपन करो, ये करो, वो करो. मैं 90% मैं तो ज़्यादा गया नहीं, जब भी जाके आता हूँ तो ये रहा की, ये रहा मेरा बैग. सारा ओपन करो, अगर कुछ नहीं मिला ना, जैसा था वैसे का वैसे ही चाहिए. अगर कुछ गड़बड़ हो तो I am ready for what. आगे का जो भी कार्रवाई करेंगे, जो आप ही के पास रूल्स है क्या? ये ऐसा फैसिलिटीज ऑल्सो है. नहीं चलो आप बहुत बड़बड़ करते हैं, मैं टीचर है तो ऐसे करूँगा. अच्छा ठीक है, बाद में बात करेंगे. मतलब here I know my rights. Here I know my duties. Consumer rights. So every time if you speak politely, automatically the opposite person is going to revert to you. So here you are not encouraging, but you are discouraging. Since the hidden, what is there? Taxes are there. Next, uncertain in nature. What is the meaning of the word uncertain? आज जिस commodity पे आप 4% बढ़ रहा है, maybe it might become 8%. And especially what is that imported chocolates and वो कुछ थोड़ा सा वो सब ज़्यादा ही government tax करता है. क्यों करता है? So that it discourages. But do you think our Indians उल्टा उसी को ज़्यादा जाके खरीद के लेकर आते हैं? अच्छा ठीक है. Then it generally discourages the savings. Why it discourages the savings? अभी जब GST का जो rate कम किया, you remember what our Prime Minister said? It is going to encourage your saving. अगर जिस commodity पे मैं 16% दे रहा था, आज मैं उन्हें 4% दे रहा हूँ. How much percent I am saving? 12%. अगर एक purchase में अगर मैंने 12% save किया, 4 purchase में I am saving 48% of the tax. So that money I can put it into my savings. Is it okay? Said that there will be less import but more export. Which one? The GST rate. देखो GST rate आके क्या है ना, ये हमारा commodities का बात हो रहा है, foreign commodities का बात हो रहा है. So then don't connect import and export. Then it becomes confused. Next it is it ना, देखो charged on consumption of goods and clothes. ये तो मैंने ऐड किया. Next it is highly inflationary. What is inflation, by the way? Rise in prices. Simple. Steady rise in pricing. Since the taxes are levied on the goods, definitely it is going to add to the inflation if it is already there. Like what Mr. Trump has then put such high taxes on so many countries, including India. But he doesn't understand if he doesn't gets the medicines on time. 90% of the generic medicine in America is Indian pharmacy. What will happen? Inflation will add more in America than in India. अगर किसी फार्मेसी पे मैं 50% टैक्स मार रहा हूँ, as you said, export import duties, कंपनी बोलेगा नहीं सर मुझे प्रॉफिट नहीं मिलता, मैं एक्सपोर्ट कैंसिल कर रहा हूँ. What will happen to those patients in America? Devoid of medicines. Have you heard about Adar Poonawala? Adar Poonawala from Pune. Anybody loves Pune or from Pune? This is Achha, she's from Pune. Like born in Pune. Adar Poonawala. मतलब not necessarily. But she is right. अरे उसका wife है कैथोलिक. उसका कंपनी देखेगा तो हिल जाएगा. 90% of the medicines ना, which are vaccines. हाँ, भैया चुपचाप करोड़पति. He looks like Shashi Kapoor. शशि तो उसके सामने कुछ भी. नहीं. अच्छा, looks like. Wait, I'll try to give a very short test. अभी ये कोविड का जितना भी बना है उसी ने, एंड आगे का भी जितना भी वैक्सीन दुनिया का बनता है वो इंडिया में बनता है और पुणे में बनता है.
Shall I put it on a faster pace? इसका डैड ने कंपनी एस्टैब्लिश किया MBA सिर्फ नेम किया never it's economics like that full that's it एक horse का race EST this is it's a latitude what is the name similar थोड़ा सा देखें you can see the अब देर में जब भी फ्री रहेगा रिसर्च करेगा you should know better from your parents where is this it is located in Pune okay so any other point you want me to explain please all the points are clear then let us go to GST okay I'm not giving notes let us go with page number 201 इसका वो वीडियो मुझे दिखाना है I hope when GST was launched you must see actually it is a Congress government का ये है था बट मोदी जी ने इसका पूरा क्रेडिट लिया लॉन्चिंग GST एंड ये रात को 12 बजे हुआ था हाँ प्रणब मुखर्जी he is no more he was a president that time पुराना पार्लियामेंट था 22 March 2011 yes very good line इंडिया का ऐसे चेंज हाँ पार्लियामेंट में चला need for India हमारे को बता गाना नहीं सुनना नहीं देखो it is live 12 that वाला नहीं वो उसका क्लब ना हाँ बेलून वहाँ पुराना पार्लियामेंट और अभी भी is a Pranab Mukherjee the then president Pranab Dabul a very senior member of Congress she's correct so what I'm trying to say this GST launch was something new but today you know at least what it is but what is this GST it was a big reduction in the confusion of tax system in India ये तो अभी ये आप लोग कर रहे हैं it is indirect उसके पहले direct
फिर एक एड वल्नरेबिलिटी था, मोड वैट था, सेंड वैट था, एंड बहुत सारा टैक्सेस था. You and me are ready to pay the taxes, but you say सर एक नाम बोलो ना. अब 4 डिफरेंट टैक्स मेरे से ले रहे जो मुझे मालूम ही नहीं. तो गवर्नमेंट वाले काम करेंगे, चारों को मिलाएंगे और एक ही नाम. You pay only one tax, but कितना पैसा उसमें से हाँ किधर जाएगा, that is my headache. I am ready to pay. अभी you are coming to UP, taking the admissions which you already took it. But counselor है जो भी explain करते सर वो 10% है ना सर, 25% है सर, टेस्ट फीस है, सिर्फ 20% है सर आपको, फिर 15% सर आपको फी पड़ा है. बोलेगा कितना तो देने का मुझे. रुको सर मैं कैलकुलेट करता हूँ सर कितना परसेंट कितना नहीं दे रहे सर, अगर मालूम नहीं है तो बोलते नहीं मैटर नहीं सर एक काम करो 50% टैक्स इधर है 20% इधर दे दो और एक ही टैक्स है. आई एम रेडी. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक द कस्टमर Not to make it complicated. वेरी गुड. सेकंड कंफ्यूजन अवॉइड करो. सो इससे क्या बेनिफिट होगा गवर्नमेंट को? पीपल आर रेडी टू पे द टैक्स. देखो जितना मैं आपको लेस कंफ्यूज करा उतना यू आर हैप्पीली रेडी टू oblige me. What is that word oblige means? ठीक है ना बेचारा इट्स And एक tax बोलेंगे करेक्ट one nation one tax. तो दिमाग कैसे तो एक्सेल है. तो बोलते हैं ना वन कंट्री एंड वन टैक्स. अभी जैसे हम लोग वो भी लेकर आ रहे हैं वन कंट्री वन लॉ. पूरा कंट्री में एक ही लॉ चलना चाहिए. महाराष्ट्र का अलग नहीं, गुजरात का अलग नहीं, वो अभी नहीं हुआ. सो जीएसटी वाज समथिंग व्हिच यू एंड मी डिड नॉट अंडरस्टैंड इनिशियली. जब लॉन्च हुआ नेक्स्ट 6 मंथ्स या नेक्स्ट 1 ईयर पीपल आर टोटली कंफ्यूज्ड. ये है क्या? नोएडा, यूपी, दिल्ली एरिया में तो बहुत सारा कंपनीज बंद ही हो गए. बिकॉज एवरी 3 मंथ्स दे नीड टू पे जीएसटी. क्योंकि हमको याद है जब अपना इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं ना once in a year you need to that also आप डिस्क्लोज करेगा फिर वो कैलकुलेट होगा. अभी ऐसा नहीं. एवरी 3 मंथ्स द कंपनी हैज टू पे. अभी देखो हर एक कंपनी का आगे अपने जीएसटी नंबर देकर रहेगा. हाँ दैट नंबर का अंदर आप जाके आप अपना सिस्टम पे डालेंगे ना आपका कंपनी का पूरा डिटेल्स. सो व्हाट बंद करना कोई एक दिन देखेगा. शी इज आउटसाइड ना लेटर को. So we always believe GST has not only reduced the confusion but also made Indian tax system more transparent. So who doesn't like transparency? Everyone likes it. हाँ कुछ जगह पर है जहाँ मैं transparent नहीं हो सकता. But where I have to be transparent, I have to be. So when government was very transparent to Indian customers, today India is the only country in the world which has the highest tax collection in the world. Why? Because now people knows how much tax I am paying, to whom I am paying, and why I am paying. देखो अभी 2011 था, and now it is 2025. How many? 14 years. Imagine rich amount collected by the central. And आप कोई भी कॉफी शॉप में या डोमिनोज में आप जब भी जाते हैं देखना दो टाइप का जीएसटी रहता है. एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी. सीजीएसटी सेंट्रल, एसजीएसटी स्टेट, but both are collected by central government. So now the central government is collecting state GST also, but it will come back to Maharashtra as per the CM and the finance minister of CM requires it. But central government उतना जल्दी release नहीं करता है. So जब महाराष्ट्र का GST इस महीने का एक example 40,000 crores है, which is very less, उससे भी ज़्यादा है. So now the CM Fadnavis is asking मुझे 30,000 crores चाहिए. 3 महीने पहले उसका application करना पड़ेगा, फिर उसका scrutiny होता है, attorney general है, solicitors है, बहुत सारे लोग. फिर 3 महीने के बाद उसको मिलेगा. But he will get that. He will get it. But if it is genuine, उसका जो demand है, CM का. So look what GST has made our country. है ना? So it is reflecting the facilities that you and me are getting today. What it was 2011 and what it is 2025. Don't you think? अभी government के पास इतना पैसा हर 3 महीने में आ रहा है, तो don't you think government is going to increase your rich facilities? Public facilities. Okay. So let I give it to Gianna. You are. Yeah. Please read my dear. GST meaning and objectives. Meaning of GST. The term GST stands for G goods, S services, T tax. Goods and service tax with value addition at each stage is a comprehensive tax levied on manufacture scale and consumption of goods and services at the national level. Underline that word national level. And ये italics में जो आता है ना वो हमेशा आप अपना आंसर में लिखना because that is what the examiner check.
So open bracket from G and close bracket in that line. ये लिख दिया ना, your 1 mark is guaranteed for the definition. Next. GST is the biggest tax reform in India, the independent India, which was launched on July 1, 2017. This come in MC. Maybe. The 5 bands of tax rates have been fixed at 0%, 5%, 12%, 18%, and 28%. A zero tax rate will apply to 50% of the items in the consumer price index. Accordingly to GST slab, 7% of the items fall under the exempt list, while 14% have been put in the lowest tax bracket of 5%. Another 17% items are in 12% tax bracket, 43% in 18% tax slab, and only 19% of goods fall in the top tax slab. ये उनका first ये था, ठीक है? Good. Objectives of GST. GST has been introduced to achieve the following objectives: to eliminate multiple taxes. GST was launched to eliminate multiple taxes by merging a large. ये line सिर्फ लिखने का आपको नोटबुक में heading डालो और ये line. I'll make reading a little bit faster. Thank you. The burden reducing है ना, उधर देखो. Another objective was to reduce open bracket from here. Reduce the overall tax burden on goods and services, and so that this will cut कर दो, which reduce the price of goods and services. Close up. Third, with the heading I'm going, its introduction, है ना, would make Indian products competitive in all the markets. For domestic, international, cancel all the markets. Next point, what is this word compliance? मतलब following the system. GST was implemented to open bracket to rationalize the tax structure and simplify the compliance procedures. Who can explain me this? Complexes. नहीं, अभी जैसे मुझे फॉर्म 16A मिलता है यूटी से, उधर मुझे फॉर्म 16 मिलता है जहाँ मैं काम कर रहा हूँ. तो ये होता क्या है? फॉर्म 16 आप आईटीडीएस में टैक्स में मारेंगे ना, आईआरएस में बताएगा फॉर्म 16 किसको मिलता है, फॉर्म 16 में किसको मिलता है, फॉर्म 16 में कितना रिडक्शन है, फॉर्म 16 में कितना रिडक्शन और कितना रीबेट है. नॉट इज रीबेट, अभी मैं आज में जो टैक्स पे कर रहा हूँ मुझे 3 साल के बाद वो पूरा पैसा रिटर्न मिलता है, बिकॉज़ आई एम अंडर दैट 5 लाख स्लैब. 10 lakhs, 15 lakhs, 20 lakhs, फिर वो रिटर्न नहीं मिलेगा मुझे. Understood? So that is what they are saying compliances. What is compliances? जितना सिंपल रखेगा उतना आपका टैक्स इनकम बढ़ेगा. So put the heading in your notebook, GST. All are yawning. अभी क्यों जा रहे हो? I asked you to keep. नहीं, it's okay. Put the heading as GST. Put the heading as GST and giving. Despite what is given in the volume. It's a letter. On हुआ है क्या? अब off हुआ. Give it to me. Right. As the name suggests. Sir, wait. As the name suggests, the most simplest tax ever introduced by. It is the most simplest tax ever introduced by Free India. Authors are saying Free India. By Free India. And because during British time also the taxes were introduced. Second point. A revolutionary chapter. If you want the spelling, please take with me. A revolutionary chapter was evolved soon after. Was evolved soon after its implementation on July 1st, 2017.
201. 2017. 1 second correct sir. ये टैक्स स्लैब्स अब आप उतना याद मत रखो है ना, दैट इज व्हाट आई फील. अगर एमसीक्यूज में आएगा तो योर टर्न. नेक्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस, its introduction ensured simplicity, elasticity. अरे 3 महीने में मैं भरेगा, 1 साल में एक बार नहीं भरेगा. Easy compliances and paved the way for, paved, P-A-V-E-D, way for overall boost up of the economic growth. I'm just waiting here, please check and let me know. Because some words are economic growth. sir, Check करो. हाँ जी. what was the name of that girl who came to ask for a pen? Who? I didn't see. ICSE one. छोटी लाइन की है. हाँ. ICSE सारा थोड़ा. This was her pencil after. हैं? कब आई वो? मैंने तो नहीं देखा. Sir, ठीक है. Yeah. Yes, sir, you were there. I was on the phone. हाँ. ठीक है. Just read this and tell. Then ये add वाला जमा proportion. ये सब आपको है क्या क्वेश्चन? ये थोड़ा टाइम लगेगा. Proportional regressive. हाँ, मैंने there. Sir, नहीं है. Add वाला हम किधर दिए? it is there. इधर है. इधर देखो ना content. That is not syllabus. That is content. हाँ but उसी में तो आ जाता है जो. No, that is other starting page में रहता है. This is she has markings like मतलब मान ली इसमें गई थी सेंड मीटिंग में फिर वापस देखते हैं starting page. That will take some bit time. तो कौन सा वाला proportional Public revenue में ना, tax revenue में meaning sources that Yes, sir. Yes, sir. हाँ नहीं है, non tax है, public expenditure है, नहीं है. सर नहीं किसकी है ना? बात कर रहे हो इधर syllabus में. नहीं बट आप क्या बोल रहे हो कि क्या नहीं है Sir, tax. Main मुद्दा ही मालूम नहीं था है. Goods and services tax meaning and objective, हाँ, वो तो progressive, हाँ proportional. वो तो दे दिया मैंने, regressive सब दे दिया. Tax meaning only. हाँ. Non-tax revenue meaning बस. with हाँ exemption. मीनिंग ही करना है वो मान लिखा इसके पहले आपने और कुछ. सर मेरे को नहीं पता था बोल देते मैं बता दिया आपको आप कोई भी बात पे ऐसा फंसते नहीं. ये cancel किया मैम ने. हाँ कट किया है. हाँ तो एक काम करो, come to page number what is that 201. 202 हाँ ठीक है. ये जो एड वाला प्रोपोर्शनल है ना वो सब पेंसिल से कैंसिल करो. प्रोपोर्शनल कैंसिल है देखा नाम ने कैंसिल किया अरे यार लेकिन ये संस्कृत जी को छोड़ो. हो सच जाएगा में मैम. पेंसिल से बोला ना नाम बोला. हाँ अगर रहेगा तो ले लो. तो इसलिए मान्या लिखा उन्हीं मीन है You earlier confessed me something. तो आपने को नहीं बताया It's okay. It's okay. एक पेंसिल Then regressive भी करो. वो भी नहीं है ना. सिर्फ मीनिंग है सर. हाँ सिर्फ मीनिंग है जो हम लोग ने कर वो लिया. इटालियन में है ना उसको से अंडर करेंगे. ठीक है. तो फिर ये चैप्टर खत्म फिर. हाँ सर. What will you read? Let us go to कैंसिल the- मत कर जो मीनिंग है ना. So shall I say any nice video about this chapter? Anything you require to check with me? If not, I will quickly start with public expenditure. Anything जिसको आपको लगता है कि इधर ये वीडियो देख के हमको थोड़ा इकोनॉमिक्स में और इंटरेस्ट आ जाएगा. वीडियो हाँ Related to the topic. yes it was a video But tell me what it is. everything Everything तो can be नवीन done. रूपाली video हाँ अब देखेंगे. Because now then you finish revenue na. This is always a connected chapter. Why we are saying connecting? Because on one side we have revenue and automatically other side what the government has to take expenditure. But how can I maximize my revenue? Anybody? by paying tax वो तो कम होगा ना मेरा revenue. by not paying tax You are then revenue by un- your social media by maximizing your revenue and minimizing your
expenditure. ये सुना कि नहीं? देखो, as a government of India now there is no project which is costing them around minimum we can say 500, 600 or 2,000, 3,000 crores. आप बोलेगा यार इंडिया के पास तो बहुत पैसा है ना? Then why the government is taxing me and you, not you, please me. Then why the government is taxing? Because these expenditures, now whatever the government takes, it is 100% is not from even SAM. They take borrowings from two international bodies. Anybody? The first body Russia. is a country. बच्चे ने बोला फर्स्ट बॉडी मुझे आता नहीं है, सेकंड बॉडी के बारे में मैं भूल गया. IMF. What do you say? Indian Monetary Fund and World Bank. International Monetary Fund and World Bank. ठीक है. Soon after Second World War, it was US and plus some developed countries which were trying to have a policy. शायद आपको हिस्ट्री में किसी ने किया क्या पता नहीं. इसको हम लोग बोलते हैं डॉलर डिप्लोमेसी. What is this word? Dollar was, putting your force on everybody. So फिर उन्होंने क्या बोला? Let us make two bodies which will take the money from these countries only and give it to the loan. Actually ये independence के पहले ऐसा था. IBRD इसका नाम था. फिर एक ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस आता है, उसका बड़ा आंसर है. इसका नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. कम अगेन. International Bank for Reconstruction and Development. A simple example I can give, you might have seen Ukraine. आजकल का यूक्रेन कैसा दिखता है? सब पूरा खंडर. All thanks to Mr. Putin. देखो ये अमेरिका उसको वेपन्स तो दे रहा है, लड़ करके. अभी जैसे वॉर का जब भी पीस ट्रीटी साइन होगा, अभी तक तो नहीं हुआ. American big companies only will enter into Ukraine. For what? Ukraine is supplying America. नहीं. यूक्रेन कैसे करेगा? सप्लाई करेगा. मतलब मैंने आपके घर को हर तरह से तोड़ दिया, हर तरह से. फिर जब आप बोलते हैं ना सर पीस ट्रीटी से आएगा, मैं ही आऊंगा. अच्छा ये प्रोग्राम के लिए इतना करोड़ दे देना, वो प्रोग्राम के लिए. मतलब अमेरिका दोनों साइड में एंजॉय कर. मतलब ऑल बिग कंपनीज विल एंटर इनटू यूक्रेन और बोलेगा कि रोड कंस्ट्रक्शन हम लेंगे, डेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग्स हम ले लेंगे. मतलब अमेरिका तोड़ने के लिए भी पैसा दे रहा है, बनाने के लिए भी पैसा ले रहा है. Understood what America is doing? So to reduce that all confusion, yeah. I mean now let us put forward here. The public expenditure generally, first I feel biggest. ये correct है? What is infrastructure according to you? Buildings. Only buildings. Bridges. Whatever. Then we say sorry. Then we say public health. इंडिया में सबसे बड़ा है. और क्या है? न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट सर्विसेज. ये भी इंडियन गवर्नमेंट करता है. Yes they do. And then Social services. वो आता होता. Then sanitation and hygiene. ये तो मुझे लग रहा है और भी इंडियन गवर्नमेंट खर्चा करना पड़ेगा. इसमें ज़्यादा पैसा. पूरा मिला के संस्कृति से it is all new which is only American government used to give, only some foreign. But India is the only country in the world which gives highest social security benefit. SSB बोलते हैं. And one person if it is under that program, which program I don't know, जो भी है वो हिंदी में थोड़ा सा भूल गया. 5 lakhs of operation in any of the AIMS. You remember last time I was asking AIMS to this class or a different class? Any idea what is AIMS? I know this. Then you don't tell me. No, I am not able to. I know this, but I No, I know have this. heard of names and All India Institute of Medical Sciences. हाँ वही मतलब. हाँ ये पहला 8 था, अभी I think 12 or 14 हो गए. अब दिल्ली का एम्स में लिखा हुआ है, it is one of the biggest in Asia. So under that particular government program, social security benefit में 5 lakhs है, one person free operation or treatment. ये मैंने पढ़ा था. I think वो कौन सा मूवमेंट है वो यार. So look how much money the government is spending here. तो पहले तो हम लोग करेंगे what is public expenditure, sources of public expenditure and is it good or bad? ठीक है. चलो अभी समझ में आ गया पूरा होल हंगामा. और लेटेस्ट क्या क्या है, मीनिंग है, टाइप्स है, रीजंस है एंड रोल है. चलो पुट द हेडिंग इन नोटबुक. 2-3 लाइन मैं दूंगा फिर बाकी तो हम क्या प्रोफिटी गोइंग द टाइम टुडे. जल्दी जल्दी ओ माय डियर.
Always you look at her and talk. We are not even talking. अच्छा आई लैंग्वेज में बात करो। हाँ बोलो क्या सर आगे क्या? हाँ तो भाई लिखो खुद। कौन सा जू से निकल के आई है? She's Diana. Diana. Sir, we had a Diwali party today. अच्छा in your school is it? Yes. Oh, what did you do then? And we had really fun. We played and now we're tired. मतलब फन करके टाइड है तो क्लास नहीं है। अरे नहीं, it is good thing. चलो लिखो तुम्हारा बात सुन पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा। संक्षिप्त में आप कुछ बोलता नहीं है। What is that संक्षिप्त in English? In short. हाँ बोलो एक वर्ड में बोल दो तुम्हारा स्कूल का। Diwali party. दो वर्ड चलो राइट अप मीनिंग all such expenses undertaken by the government by a government. So all such expenses Now I will by a government. Government. Is it government? by a government for. You write 1, 2, 3 down. It's easy over there. By a government. For one. 1. You write. Sir, that you wrote. The headline we should write out. हाँ. You wrote on the board that we have put. ए वो सब मत लिखो. Ensure internal peace and security. हाँ वो तो है. Okay, I'll wait. Welfare of society. 2. Government maintenance. मतलब इतना बड़ा डिपार्टमेंट भी उनको सैलरी वगैरह है ना. Government maintenance. 3. Several public welfare programs. Public welfare. Programs. Next. Maintenance of law and order. Next. Health, welfare, sanitation and hygiene programs. Health, I'm going slow. Welfare, sanitation, And hygiene programs. sorry. Programs. Next. Internal peace. ये आजकल इंडियन गवर्नमेंट का सबसे बड़ा कल्चर है ना? Internal. Peace. External security. If I'm carefully writing ना उतना ही लिखना एग्जाम में. Internal peace and external security. And the last one. Modernization of transport, communication and related programs. बस ये प्लीज रीड करके देखो थोड़ा सा बड़ा हो गया ऐसा लग रहा है. Communication and Other related programs. बस चेक करना. अगर आप ये लिख सकते हैं इसमें से 5-6 भी लिख देना बहुत हो गया. Not all. Then I will not make you to write. Is the AC on or off? What is this? Why? it is cold. तो 23, 21 तो करना तो रखो. तो चलेगा पहला वाला. वो बेचारी बैठी है फायरिंग लाइन पे. तो इसका डाला और डायरेक्टली और. चलो मैं 23 रख रहा हूँ. एटलीस्ट ये थोड़ा सा सफोकेशन नहीं होगा है ना. ये रूम में वेंटिलेशन. चलो come to page number 215. I'll give her the reading. Meaning and objective. है ना? Read. I will not interfere in your reading. Only marking the note. After you finish. चाहिए ऊपर वाला पढ़ना है. And जो भी डाउट आएगा उससे आप पूछ सकते हैं.
directly. Did you hear what did I say? Yes. Not doubt. जो भी आएगा ये तीनों आपसे पूछेंगे Just explain it to us. और उसमें से डाउट आएगा तो मेरे से पूछेंगे but I think you are fully capable अच्छा चल let us have a test of Meaning of public expenditure. हाँ Public expenditure refers to हाँ वो नहीं समझेंगे objectives में ensures objectives of public expenditure. The main objectives of public expenditure are described below. Ensure internal peace and discipline. It is the major duty of government to ensure peace and discipline and security of the people. The security team and police are playing this role on behalf of the government. For this, the government needs to expend a lot of money to keep the security team and police for the people. very good anybody self-critic good What? I said good reading check if anybody have a doubt Geos no sure and don't give that you are a friend don't push second point मैं पूछूं Protect the country from an external enemy. Another objective is to protect the country from external enemy. Every country builds a security team for its freedom and sovereignty. For this, the government spends a lot in this sector. Third, official. wait anybody nobody मतलब आर्मी के लिए ही समझ में आ गया बस। Hey, what is sovereignty Like you can also but why anybody can what is sovereignty by the way for its freedom and like was India a nation Sovereign मतलब like for the अरे वो थोड़ा सा high respect and all उसका. respect के लिए तो अगर high कर तो दूर अरे की यार, it doesn't show. I don't know. fully कचरा हो गया देखो is America having 100% sovereignty no. yes sovereignty होता क्या है India doesn't have main sovereignty doubt अभी देखो इंडिया आज सुबह हाँ ब्रश मैंने कर पता. Sovereignty मतलब complete freedom. मतलब इंडिया के पास गवर्नमेंट है पीपल है डिसीजन मेकिंग है बट कंप्लीट डिसीजन मेकिंग अमेरिका के पास है और रशिया के पास है अभी जैसे if today America India starts attacking Pakistan America will be the first person to ask why did you attack Because India. did you get the permission of UN और वो खुद करता रहेगा प्रोग्राम अभी देखो this Mr. Putin has been sanctioned by America day in and day out but he is born तुझे जितना sanction डालने का डाल I don't know how good are you in nationalistic sense ये ऑपरेशन सिंदूर अपने सिर्फ 3 दिन का ही था 2 दिन का पकड़ो very quickly India withdrew नहीं चाहिए before the foreign countries come and sanction India India ने रोक दिया बट 2-2.5 दिन में जितना बचाने का था कर दिया हाँ so one I want to say very simple what is that simplicity that is India a sovereign country yes it is but not in all respect read the next one Third, official expenditure. The other objective of public expenditure is to operate official expenses. The government needs to appoint many employees to operate the official activities of the country. So the government needs to pay a huge sum of salaries for these employees. So you might have seen the facilities in that Delhi area. The houses, the security, lavishness, everything is sponsored by the government as long as you are a minister. Plus, Or if you are even if you retire, उसका एक fixed portion उनको जाता है. or you I are remember government they say Singapore is the only government which gives the highest salary to all the ministers so that they don't go into corruption. अभी बोलते हैं नहीं, it is India. But then is our minister free from that CURR No. जब तक वो टीवी में नहीं आता हमको लगता है ये तो बहुत महान इंसान है ना बट फिर उसका करप्शन स्केल आता है इधर इतना 1000 करोड़ लिया उधर 1500 करोड़ लिया Have you remember Lalu Prasad Yadav? So there was someone in Delhi now that time. Someone कैसे था मैंने Arvind Kejriwal. हाँ वो तो बाबा चलो next point हाँ Economic development. The direct participation of government in economic development is another objective of government expenditure. Fifth, economic stability.
The objective of public expenditure is also to maintain economic stability. Government participation is important when a country faces inflation or deflation. Hey, now tell me before she goes into the next point, is this point enough for you to write or shall I give it in one So sentence? it's small and Make it up. This is a very simple ठीक है एक काम करते हैं फिर डायरेक्टली हम लोग टाइप्स में जाते हैं है ना चलो खुद राइटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर right? Can we give us markings instead? मैं ओनली हेडिंग डालूं आई एम नॉट गोइंग टू गिव रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर so that at least with the class we are all moving है ना ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर खत्म हो गया और आपको कुछ आता नहीं so should I? No, thanks. That I will do this. Shall we? I am reading. Keep your pencils ready. So side by side में explain करते चले जाओ. और कितना chapter? ये तो ये Sunday. Shall I keep it at 10 o'clock? No, sir. Sir, afterward. Please. रुको रुको. पहला टेस्ट कभी है तुम्हारा? कौन सा test? Sunday को. This will But है क्या? Sir, I have a class. देखो, you don't go for outside programs and that I cannot adhere. No, it's an online class. क्या टाइमिंग है? 10 to 12. So I'll keep it at 8:30 to 10. सर सोने तो ना एक दिन ही मिलता है चलेगा पागल सुबह ना। तुम्हारा यार है ना, लेकिन एक So keep it in the morning. हाँ 8:30. क्योंकि दोपहर में सर it will get late and Tomorrow anyway I'll confirm. These girls are coming na tomorrow. Or you anyway message तो आएगा. so well. Because they got my tomorrow my geography lecture is there. हिस्ट्री हाँ मैं timetable में देखूँगा. So I will convey to them. I will speak to them and finish it up. आप 8:30 आके 9:50 को चलें. Online है तो इधर पे बैठो. हाँ, इधर वाला ऑन करके रख सकते हाँ बिल्कुल बैठ सकते. कौन सा क्लास? कौन सी क्लास? कंप्यूटर है. कंप्यूटर का पढ़ना अरे बीच में यस में मत करते रहे अरे मेरे को तो कोड बेशक. कर दिया ना. Let us read the revenue expenditure. नहीं दिख रहा है? कल तो आपका है ही नहीं। हाँ तो मैं कल केमिस्ट्री भी नहीं है। कल मैथ्स रखा है। अरे फिर छुट्टी होगी कल ये कल रखा है तो कल ही कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ संडे फिर. सर भी एक मिनट का हिस्ट्री 11:45 से 1 हम एक ही क्लास है बट वो सुबह है। तो फिर इवनिंग 11:45 से छोड़ दो संडे हम देखेंगे. फिर 1:45 से बिकॉज़ एक दिन मुझे संडे मिलेगा ना, वी आर गोइंग टू एंड एटलीस्ट अरे जितना बचा है 11:45 को ना तो उससे पहले लेगा ना अरे क्लास। कल कल के 11:45 को Oh my dear. Hey, listen. Now it is 7:20. These Hey, office history people है. might have gone. आया है ग्रुप में चेक कर आया है. अभी मेरा पूरा टाइम ऐसे ही जाएगा. दिया ना प्लीज. वो मेरा हाथ में मैं चेक कर लूंगा. When they are going to put your timetable also, they'll check all other अच्छा things. बायोलॉजी ज्योग्राफी रखा है ना सर कभी संडे को 10 से 2 मेरा नाम है. नाम नहीं है बस लिखा है ज्योग्राफी ज्योग्राफी हाँ तो मैं नहीं रहूँगा ऐसा लेक्चर. चलो ठीक. तो 10 to सर शी मेक्स अस स्लीप सर एवरी टाइम 10 to what? 10 to सर हाँ तो फिर मेरा इकोनॉमिक्स नहीं होगा. कल इनका मैथ का 11:45 को है My dear girl, I'm neither keeping on Saturday nor on Sunday. Relax. चलो. तो कल है क्या चलो revenue. Come. Hey guys, चलो. या Underline. Revenue expenditure underline. Current expenditure incurred on civil, defense, public health and education. किधर सर अरे distinguish है ना. Capital incurred on open bracket construction, building, dams and plants, steel plants. Underline here revenue recurring. Here non-recurring. Developmental. It is non-developmental. This is developmental. Because when a finance minister takes this expenditures in a table or in his table, she wants to see more of capital expenditure, less of revenue expenditure. Why less of revenue? because it might show the मतलब ये खर्चा है गवर्नमेंट के लिए बट करना ही पड़ेगा. But at the same time capital expenditure might bring the revenue. But नाम तो उल्टा है. देखो it is recurring, regularly and a non-developmental. Non-developmental का मतलब क्या कंट्री का कुछ डेवलपमेंट नहीं होगा. ओके चलो. देन अभी
ये बहुत बड़ा है ना डेवलपमेंट। डोम लेवल है। तुम 5 मिनट लेट आए ना, तो 10 मिनट में लेट छोड़ दूंगी। तुम्हारा लेक्चर कब स्टार्ट हो रहा है मैथ्स? Not in maths, यार. Sir. That is nothing to be seen. ठीक है, relax, छोड़ दो। I am not teaching you. Thank you, sir. Shasha. What is that Shasha? Shasha school, sir. बायो है 5 बजे। सुबह के? हाँ 7 बजे उठ के जाती थी। देखो जो डाउट था वो पूछ लेना। अरे यार। These guys are planning. आप लोग मूवी क्या कर रहा है संडे? नहीं सर। क्यों क्या हो गया? सर को पता है क्या? हाँ सर, मैं सॉरी मैं इनको दिन भर लेता, खुद ही प्रोग्राम बनाया था। चला कर गया रहेगा बच्चा, मुझे याद नहीं आया। सर एक्चुअली सर मम्मी ने नहीं बोला। अच्छा, पहले एग्जाम खत्म हो वो एक एग्जाम के बाद जब इधर कांतारा बात किया जा रहा है, आपके घर में आ जाएगा वो वीडियो का और एक दो हफ्ते। हाँ सर थिएटर का सब जीवी है। हाँ, but if it is some Marvel production, how I many of you wanted know? to watch F1 movie in theater यार। वो जॉन मूवी का देखा आप लोगों ने? बेबी जॉन। पूरा ब्लैक एंड मूवी रहता है, but you should watch it in theaters. Keanu Reeves का मूवी है जॉन। जो ऐसे में हाँ वो फाइनल डेस्टिनेशन। नहीं हाँ सर, did you watch Final Destination? इनिशियली 1 and 2 अच्छा था, अभी 7 चल रहा है ना, कुछ भी दिक्कत है। मैं तो उसका एक आईडी बना दूंगी। पागल है क्या? How many are going to run away after this? देखो And you two are from ICSE. Up till 7:30. नहीं 8:30. चलो अच्छा है। Welcome to PDG. मेरे को निकलना है। एक काम करो, by next week, I don't know, it will be a holiday only. Yeah. Friday, है ना? Friday holiday? हाँ, इधर यूटी में भी छुट्टी है। तो यूटी में कितने दिन छुट्टी दिवाली की है? 4 दिन है। सर यूटी छुट्टी नहीं देता सर। ये 5 So if at all we are meeting on Friday, na, we will. Sir, do you listen to the नहीं weekend? आ रही। Weekend. The weekend, yes. Who is it? He's just saying, oh, you don't know weekend. लाइफ में खाना पीना और पढ़ाना ये 3 काम Sir, listen, sir. I'll tell you. आज वो 9 के बच्चे ने मुझे एक सिंगर का नाम बताया, that girl who takes flight everywhere, Louise Flight. सबरीना का बेटा? नहीं, कुछ अमेरिकन लड़की है, उसका बॉयफ्रेंड कोई तो फुटबॉलर है। अरियाना ग्रांडे। फुटबॉल। ना हरियाणा ग्रांड। Louise Taylor Swift. Taylor Swift. Is it such a good singer? She is very nice, but weekend is the god. चलो, I wish you a very happy Deepavali to everyone. Okay, have a